Starting with the name of Almighty Allah, who is most kind and most merciful. In parts of speech, we have already discussed 7 parts. Today we are having the last part, and that is interjection. So what is interjection? Interjection is a word which is used to show or which is used to convey strong emotions or feelings. इंटरजेक्शन जो है ये एक ऐसा लफ्ज है जो बहुत ज्यादा एहसासात को या बहुत ज्यादा जज्बात को क्या करता है, शो करता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ऐसे अलाज हिज फादर डाइड, अला उसका वालिद फौत हो गया. ये अलाज जो है ये क्या है, ये इंटरजेक्शन है, कलमे तअज्जुब है. ठीक है. तो इंटरजेक्शन क्या शो करता है, ये स्ट्रांग इमोशंस को, बहुत ज्यादा जज्बात को शो करता है, स्ट्रांग फीलिंग्स को. ठीक है. बहुत ज्यादा एहसासात को क्या करता है, शो करता है. फॉर एग्जाम्पल इट शोज व्हाट, इट शोज सरप्राइज, सारो, जॉय, हैप्पीनेस. ठीक है. तो इंग्लिश में हम इसका डिफिनेशन किस तरह करेंगे. एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड या इंटरजेक्शन a word which is used, a word which is used to show, a word which is used to show strong emotions or feelings is called interjection. ये है क्या, ये है इंटरजेक्शन का डिफिनेशन. A word which is used, वो लफ्ज जो इस्तेमाल होता है. ठीक है. किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, टू शो, टू कन्वे, टू शो, ताकि ये शो करे, ये दिखाए स्ट्रांग इमोशंस, बहुत ज्यादा जज्बात को, और फीलिंग्स या बहुत ज्यादा फीलिंग्स को. इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड इंटरजेक्शन. सो वी कैन डिफाइन इंटरजेक्शन इन दीज वर्ड्स. अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू शो स्ट्रांग इमोशंस और फीलिंग्स इज कॉल्ड इंटरजेक्शन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, Allah's sign of exclamation. ठीक है. Allah's his father died. Allah's जो है ये किस चीज के लिए, किस पर्पस के लिए या क्या शो करता है, ये सारों को शो करता है. ठीक है. गम को शो करता है. Allah's his father died. अल्लाह उसका फादर जो है क्या हो गया, फौत हो गया. ठीक है. तो ये अलास जो है ये क्या है, ये इंटरजेक्शन है. ठीक है. ये इंटरजेक्शन है, ये अलास. ठीक है. और आफ्टर अलास ये जो है, फॉर एग्जांपल आई है या एक है, इसके नीचे क्या है, एक डॉट है. इसको हम कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. जब भी हम इंटरजेक्शन का लफ्ज यूज करेंगे तो उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. ठीक है. सेकंड एग्जांपल, हुर्रा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. वी हैव won the match. Hurrah, we have won the match. मतलब हुर्रा किस चीज के लिए यूज होता है, खुशी के लिए, जॉय के लिए, हैप्पीनेस के लिए. ठीक है. दिस इज व्हाट, दिस इज इंटरजेक्शन, जो ये शो करता है वी हैव वन द मैच. ठीक है. मतलब खुशी का लफ्ज है, ये यूज होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम मैच जीत चुके हैं. ठीक है. तो हम कहते हैं हुर्रा वी हैव वन द मैच. ठीक है. तो ये हुर्रा जो है ये क्या है, ये इंटर
इंटरजेक्शन है, ठीक है। और ये क्या है, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ठीक है। अनदर एग्जांपल, oh, sign of exclamation, what a nice shirt. फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत अट्रैक्टिव शर्ट है, ठीक है। आप उसको देखते हैं तो आप क्या कहते हैं, ओह व्हाट अ नाइस शर्ट। तो ये ओ जो है ये क्या है, ये इंटरजेक्शन है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, फॉर एग्जाम्पल, वाओ व्हाट एन अमेजिंग पिज्जा। तो ये वाव जो है ये क्या है, ये इंटरजेक्शन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ज्यादा अच्छी पिज्जा है, ठीक है, अच्छा पिज्जा है, तो आप उसको देखते हैं, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, वाओ व्हाट एन अमेजिंग पिज्जा, ठीक है। तो ये क्या है, ये वाव ओ हुर्रा अलास, these are called what, these are called interjection, ठीक है। And they are used for what purpose, to show strong emotions or feelings. So this was the last point in parts of speech, and which was what, which was interjection, ठीक है। ये हमारे पास जो था parts of speech में, ये लास्ट पॉइंट था इंटरजेक्शन कल में ताजुब, ठीक है। तो हमने बहुत ज्यादा डिटेल के साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं, ठीक है, जिसमें हमने नंबर फर्स्ट पढ़ा नाउन, नंबर सेकंड हमने पढ़ा प्रोनाउन, नंबर तीसरा हमने पढ़ा एडजेक्टिव, नंबर फोर्थ वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, और नंबर 6 प्रीपोजिशन, नंबर 7 कंजंक्शन, एंड द लास्ट वन वाज व्हाट, द लास्ट वन वाज इंटरजेक्शन, ठीक है। तो होप यू विल easily understand parts of speech